In this video, we will try to understand what we call or what we say a trace of a matrix and then what is a transpose of a matrix. First, we shall understand what is a trace of a matrix. पहले हम समझेंगे कि trace किसी भी matrix का trace किसे कहते हैं. कोई भी अगर square matrix हो तो मान लीजिए एक square matrix है 3 by 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट. तो ये जो अब एलिमेंट्स है 1 5 9 यानी जो एलिमेंट्स है A11 A22 और A33 किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट्स कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. तो जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होंगे इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो जो हमें गुणाफल निकलेगा उसे कहा जाता है trace of matrix A. So the sum of the elements of the principal diagonal. Now what is the principal diagonal here? These three elements are known as principal elements of principal diagonal. That is A11, A22 and A33. The summation of the elements of the principal diagonal is of any square matrix is known as trace of matrix of that particular matrix. And trace of any matrix is written as, if it is trace of A, it will be denoted as this TR and bracket in A capital letters in bracket. So what would be the trace of A here? It will be 1 plus 5 plus 9. So this will be equal to 15. So trace of A will be 15. Reminding it that it will be always for a square matrix. ये हमेशा और हमेशा एक square matrix के लिए ही ढूंढा जा सकता है जिसका principal diagonal elements को हम add up कर देंगे. Okay, fine. Now we come over to the next topic in the chapter of matrix, that is transpose. This is also with regard to any kind of a matrix. स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, वेक्टर मैट्रिक्स हो सकता है. सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, से सपोज मैट्रिक्स ए, राइट, एंड it has elements like A11, A12, A21, A22. It's a 2 by 2 matrix, right? So for any matrix, given matrix A, if in the new matrix we interchange the rows into column and column into rows. अगर हम कोई भी दिए गए मैट्रिक्स ए, कोई भी दिया गया मैट्रिक्स हो और उसका एक नया मैट्रिक्स फॉर्म निकालते हैं जिसमें कि उसके स्तंभ को हम पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उलट पुलट करते हैं, राइट. सो वी आर इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज. Let's see how do we do that. Say suppose we take this row and we write it in column this way. So we'll write A11, A12. We take the second row and we'll put it into the second column, A21, A22. Then this kind of an arrangement where we are interchanging rows into column and column into rows, then it will be known as transpose of A. And we denote it by either A dash or A to the A and T, a small superscript T. इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. कोई भी हम मैट्रिक्स लेके इसको देख सकते हैं. लेट अस टेक अनदर मैट्रिक्स. से सपोज वी टेक बी. ठीक है, बी को हम लेते हैं 3 2 5. बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3 into 1. इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा. हम इस पूरे कॉलम को रो में परिवर्तित कर देंगे, है ना. So we will get 3 2 5. So we get 1 into 3. See the order is getting changed. The order will get reversed. रो कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा, कॉलम रो में परिवर्तित हो जाएगा. एक और लेके देखते हैं. Let us see. Say suppose C is equal to 3 6 9. So C transpose will be equal to
3, 6, 9. This way. Okay. Now let us understand there are certain properties of transpose of a matrix. कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम एक एक करके प्रॉपर्टीज को करते हैं. पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और उसी का फिर से ट्रांसपोज निकाला जाता है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द ट्रांसपोज of a transpose of a matrix will be equal to the original matrix. Let us prove this, okay? Say suppose A is given to us. A is 2, 3, 4 and 5. So what is A transpose? A transpose will become 2, 3, 4, 5. And A, the transpose of A will be equal to again 2, 4, 3, 5. So we see that this is equal to the original matrix. Hence, we can say, hence, A transpose is equal to the original matrix, that is 2, 3, 4, 5. It's proved, right? Similarly, we go on to the next property. In our next property, we will find that when there are two matrices A and B, दो मैट्रिक्स हैं A और B और दोनों के सम का हम ट्रांसपोज निकालते हैं. So we find the transpose of the sum of two matrices, then it is equal to the sum of the two transposed matrices. Okay? If there are two matrices A and B, अगर दो मैट्रिक्स है उन दोनों का सम निकालते हैं, हम दोनों का योग करते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर फिर योग करने से जो हमें योगफल मिलेगा उसके बराबर हो जाएगा. So let us now find this. Let us prove this. Say suppose A is equal to 1, 2, 3 and 4 and B is equal to 5, 6, 7 and 8. Okay? Let us verify this property. तो A तथा B का योग करेंगे तो क्या निकल जाएगा? If we add the two matrices, what shall we get? So we will add every element, the corresponding element, and they are two conformable matrices. They can be added. So we get 1 plus 5 is 6, 2 plus 6 is 8, 3 plus 7 is 10 and 4 plus 8 is 12. ये हो जाएगा हमारा A plus B. Now we find the transpose of this matrix A plus B. So what do we get? 6, 8, 10 and 12. Okay. Now we separately find the transpose of both the matrices A and B. So what is A transpose? A transpose is 1, 2, 3 and 4 written in alternate fashions, right? यानी हम रो को कॉलम में परिवर्तित करके लिख रहे हैं. B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? उसी तरह से 5, 6 रो में है उसे कॉलम में लिखेंगे, 7, 8 रो में है उसे कॉलम में लिखेंगे. इन दोनों को अब ऐड करते हैं. लेट अस नाउ ऐड A transpose and B transpose and find what do we get. So what do we get? 1 plus 5 is 6, 3 plus 7 is 10, 2 plus 6 is 8 and 4 plus 8 is 12. Fine. So now you can see that the result of A plus B transpose and the result of A transpose B transpose is the same. Hence it is proved that A plus B transpose, whole transpose, will always be equal to A transpose plus B transpose. Coming to the third property, it's in a product rule. So say suppose there are product of matrices A and B and we take out the transpose of this product, then this will be equal to B transpose into A transpose. अगर हम दो मैट्रिक्स A और B का गुणाफल निकालते हैं AB और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा?
बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का गुणाफल. लेट अस अगेन prove this out. Say suppose A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 0, -1, 6 and 7. Let us verify this property. So what would A into B become? So AB is equal to 1 into 0 plus 2 into 6. Again 1 into -1 plus 2 into 7. Second row will include 3 into 0 plus 4 into 6, and the next component A22 will be 3 into -1 plus 4 into 7. So this will be equal to, this is our AB, which will be equal to 0 plus 12 is 12, -1 plus 14 is 13, 0 plus 24 is 24. This is -3 plus 28 is 25. Okay? Okay. So now we will find what is AB transpose. What is AB transpose? We'll just change the rows into columns. So 12, 13, 24 and 25. We'll write it this way. Now let us separately do B transpose and A transpose. What is B transpose? B transpose is 0, -1, 6 and 7. A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4. इस तरह से लिखेंगे. अब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी B के एलिमेंट से हम A को मल्टीप्लाई करेंगे. B हमारा प्री मल्टीप्लायर होगा, A हमारा B ट्रांसपोज प्री मल्टीप्लायर होगा, A ट्रांसपोज पोस्ट मल्टीप्लायर होगा. So we get 0 into 1 plus 6 into 2. Then we'll get 0 into 3 plus 6 into 4. Again over here we'll get -1 into 1 plus 7 into 2. And then A22 element में क्या मिलेगा? -1 into 3 plus 7 into 4. So what do we get here? We get 0 plus 6, sorry, 0 plus 12. Over here we get 0 plus 24. Again we get -1 plus 14 and -3 plus 28. So what do we get here? 12 minus 30, 12, 13, 24 and 28. What is this? This is B transpose into A transpose, है ना? क्या ये similar है दोनों? Yes. So we can say that when we transpose the product of two matrices, it is equal to the product of the transposed matrices of B and A. यानी हम जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट. ओके. इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम तीन मैट्रिक्स ले रहे हैं A, B और C, इन तीनों का अगर गुणाफल करके हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये बराबर होगा C ट्रांसपोज into B transpose into A transpose. So the transpose of the product of three matrices will be equal to what? The product of C transpose, B transpose and A transpose. You can also verify it by a similar example. Right? Now, so that was a third property. Now we come to the fourth property of transpose of a matrix. And what do we get here? Let us see that if any given matrix A is multiplied by a scalar number k, and then we find the transpose, this will be equal to k multiplying the transpose of the matrix A. कोई भी एक मैट्रिक्स A को अगर हम एक संख्या, स्थिर संख्या k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं
तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के ट्रांसपोज के साथ उस संख्या को मल्टीप्लाई करने से जितना निकलेगा उसके बराबर हो जाएगा। लेट अस वेरीफाई दिस। लेट ए बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5. Okay, and let k be equal to 5. So what will become ka? Ka क्या होगा हमारे लिए? Ka हो जाएगा 5 into 2, 3, 4, 5. So this is equal to 10, 15, 20 and 25. Okay, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं Ka ट्रांसपोज. So we'll get 10, 15, 20, 25. अब हम निकालते हैं A transpose. What is A transpose? A transpose will be 2, 3, 4, 5 written in this manner. Fine. Then we multiply A transpose with K. So we are multiplying 5 and the transpose of matrix A. What do we get here? 10, 20, 15 and 25. Aren't these both similar? Yes, they are the same. They are equal. Fine. Okay. So we can say that Ka whole transpose will be equal to K into transpose of A. That's verified. So these were the properties of transpose of a matrix. If you have any doubts, you can connect on WhatsApp and ask your queries, or whenever I take the next Zoom class, you can ask your queries.